अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। ज़ैनब अब्बू कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बेहतर है कुछ। चलें ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब घर पे ही है ना? हॉस्पिटलाइज तो नहीं है ना? इज ही एट होम और हॉस्पिटल? जी सर, घर पे है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, दैट्स गुड न्यूज़। चलिए जी, बाकी भी ज्वाइन कर लें। Okay, chale ji. Let's resume. So again, this is question number 2, October November 2016. Variant 4 to question 5 का B part है. Question का context चल रहा था. It was talking about a wolf, and then finally, that's the question that they're asking. Suggest what actions may have been necessary at local, national, and global levels to contribute to successful conservation of biodiversity of Italy's large mammals. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. उन्होंने मार्किंग स्कीम में 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं. अगेन आप देखें कि वो दे विल रिवॉल्व अराउंड द सेम आइडियाज दैट दीज गवर्नमेंट्स दीज नॉन एनजीओज दे डू. नंबर 1 इज एजुकेशन. नंबर 2 इज कॉम्पनसेशन स्कीम्स, इंसेंटिव्स, क्योंकि लोकल लेवल की बात हो रही है तो इंसेंटिव्स फॉर फार्मर्स, ओके, एंड सो फोर्थ. बैन ऑन हंटिंग, रेफरेंस टू पॉपुलेशन मॉनिटरिंग, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट्स, लॉज, ये जितनी भी आपकी एनजीओज हैं, reference to WWF sites, trade agreements, reference to zoos, reserves, national parks, and then of course captive breeding and sperm banks. Okay. इसकी हम एग्जामिनर रिपोर्ट भी देखते हैं ज़रा जल्दी से. एग्जामिनर रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं. One of the ways, one of the things that distinction holders they tell us that they did was going through the examiner reports. So do this for all subjects, you'll see the wonders. Anyhow, 4.2 का question 5B part. Okay, great. So, all right, there you go. Okay, so there you go. Okay, so they're saying this question was generally well answered, with most candidates mentioning the need for research or education, the need to ban hunting, the need for zoos or reserves and captive breeding. A few candidates recognize the parts played by sites or WWF, some specifically mentioning the trade agreements. ठीक है, तो ये दो examples मैंने आपके सामने रख दी हैं, which are basically explaining what this is all about. So this was basically NGOs in conservation, like WWF and sites. ठीक हो गया जी. चलिए जी, ये जब आपको PDF फाइल में आएगा तो उसके ऊपर लेबल्ड होगा. अच्छा जी, now the last part that I want to talk about is outline how degraded habitats may be stored with reference to local and regional examples. ये जो आखिरी सिलेबस का पॉइंट है, इस पे exactly the same question has been asked. So let me quickly open that for you. मैंने खोला हुआ वो पहले से, so I don't need to go. Okay. So I think I closed the wrong. Yep, there it is. अच्छा, वो मैंने पहले पेस्ट नहीं, वो पहले पेस्ट नहीं किया था. So it is somewhere here.
यस, ठीक है जी, ये आपका जी क्वेश्चन है। So let me quickly paste this also on a separate page. Okay. In pictures, files, challenge. Okay. Challenge. Outline how degraded habitats may be restored with reference to named examples. This is, let me show you. ये वाला part है. Outline how degraded habitats may be restored with reference to local and regional examples. It's one and exactly the same. पूरा उसको एज ए क्वेश्चन बना के ये वेरी रीसेंट पेपर में मई जून 2019 में आया है. आई मीन इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, you know, actually the question is very easy. Outline how degraded habitats may be restored. ठीक है, यानी कि आपका कोई ग्रास लैंड है वो डिग्रेड हो गया हुआ है या फिर whatever the case is. So these are 13 points, 12 or 13 points. Let's go through them, and you can always go back to them for remembering your points for notes. So some techniques are, number one, deforestation होगी तो simply क्या कर दें, reforestation and replanting. And then number two, reintroduction of named native animal species. Okay, bioremediation. Bioremediation is basically biological process to revive something that has been destroyed. इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं. कोई सी भी एक एग्जांपल, जिस तरह इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की मैंने आपको सिर्फ कल आई थिंक 2 एग्जांपल्स दी थी, आपकी टेक्स्ट बुक में भी और हैं. लेकिन अगेन मैं बार बार इस पॉइंट को रिइटरेट कर रहा हूँ, आई एम डूइंग स्पून फीडिंग एंड मेकिंग योर वर्क वेरी इजी, लेकिन दिस इज इन नो वे अ रिप्लेसमेंट फॉर यू नॉट टू गो थ्रू दिस द थिक टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, अच्छा जी. उसके बाद बबलिंग ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीजनेटेड वाटर. ऑफ कोर्स ज़्यादा ऑक्सीजन आप देंगे, मोर रेस्पिरेशन एंड मोर, basically that supports life. Number 5, reference to normalizing pH of water bodies. Okay, um, clearing, purifying rivers, lakes and water bodies. Dredging उसको कहते हैं पानी की सफाई basically. Litter या waste removal. Removal of toxic layer of soil cleaned and put back. So जो top layer है अगर वो toxic है तो उसको replace करें. Idea of improving soil fertility. Cow dung जो डाला जाता है, basically that application at very small level and large level is basically for that purpose. Removal of alien species, protection against grazing. अगर grazing करके कि सारे land को अगर कुछ animals खत्म कर रहे हैं तो you need to protect that. And then some other named examples. I mean, honestly, अगर आप, if you look at the nature of this, ये आपने geography में बहुत basic चीजें पढ़ी हुई हैं. I mean, I hope nobody is there who can't understand all of these points. These are simple ways जब जिससे आप degraded habitats को restore कर सकते हैं. Examiner report says candidates were aware of what gives rise to degraded habitats, but most were unable to provide suggestions for actions needed to restore them. Answers often incorrectly focused on measures for preserving threatened species. यहाँ पे ये बात याद रखें, ये question is about how degraded habitats may be restored. The question is not about how conservation is being done for animals and plants. Okay, so that was not something acceptable. Valid suggestions were narrowly focused on replanting trees and very rarely removal of alien species. We know the threat of alien species. We looked at that yesterday. Few responses, including named examples. The most frequently mentioned were the Amazon forest, the mangroves of certain sundarbans of or water of Arabian Sea. Okay. So again, you will find these examples in your textbook. 1 or 2 examples should be remembered as they have separate marking points, as you can see, point number 12 and 13. ठीक हो गया जी. चलें जी, तो ये आपका हो गया. इसको भी हम रीनेम कर देते हैं. This is restoration of habitats. Restoration of degraded habitats. All right. Challenge. So few questions now that I have
ऑन माय माइंड, और कुछ एक मैंने जो आपको कल लिखवाए थे उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस टॉपिक। ओके, चलें एक काम करते हैं कि क्या ना आपके स्कूल्स में पेपर्स वगैरह तो नहीं चल रहे बच्चों आज आजकल? ज़ैनब, पेपर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ज़ैनब, ओके, नो, ओके ग्रेट। चलें फिर आपके लिए एक छोटी सी ट्रीट है, और वो ट्रीट ये है, ये देखें ज़रा। आई एम गोइंग टू पिक अनदर कलर। कौन सा कलर लूं? ठहरे ज़रा एक सेकंड, ब्लू वाला लेते हैं। चलिए जी, आपने इसको अपना होमवर्क समझ लें। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, थोड़ा सा मैं आपके ऊपर इसलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज a lot of spoon feeding with this, आप कहेंगे ये तो बहुत easy है, जब टाइम आएगा याद कर लेंगे, and then you will forget. That's the last thing I want you to do. So I want you to, ये जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैं आपको भेज भी दूंगा आज रात को इंशाल्लाह। I want you to go through these questions yourself and make bullet points for these. ये जो मैंने आपको शुरू में पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया था, of zoos, botanical gardens. So this is a question, and then you have this one, and then you have this one, and then और कौन सा, ये IVF वाला है, this one, and then also yes, these are the 1, 2, 3, 4, 5 questions that I want you to go through, जो कि इस पार्ट से रिलेटेड हैं, C और D से। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन भी किया है। I didn't only rely for past papers on this, but again, I want you to do this yourself. और बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी अगर इनके नोट्स बना के आप ग्रुप में मुझे पिक्चर भेज दें, तो आप मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह, that finishes our topic of biodiversity, classification and conservation. Now the time that we're left with, alhamdulillah, is perfect for us to jump on to the last topic, which is I mean the time remaining for December, not today. मैं आज नहीं शुरू कर रहा नया topic. So inshallah we are going to begin from Monday. आज क्या होगी? Wednesday होगी? जी आज Wednesday होगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम in the next 4 or maybe 5, max 4 classes, वो topic इतना बड़ा नहीं है, we should be able to wind up our next topic, और फिर उसके बाद उसके हम past papers को कर लेंगे। ठीक है जी? Any questions we have for today? Any comments? Any concerns? कल मैंने आपको क्लास नोट्स भेजे थे ग्रुप में, देखने दे मुझे जरा। I did send class notes yesterday. Yes, I did. 15 था ना कल? ठीक है, तो आज मैंने आपको क्लास नोट्स भेजने हैं। कहाँ से? यहाँ से भेजने हैं? No, send it from here. Okay, great. ठीक है जी, चलें जी। If you have and don't have any questions, we are ending 10 minutes early today, inshallah. See you on Monday, बच्चों, with a new topic. मैं आपको एक क्लास नोट्स भेज दूंगा. Please make sure you take out time to read through the last part of conservation from your textbooks. It's very important. Past papers में बहुत questions होते हैं इसके, तो इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, चलें जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, I'm ending the session for today. Thank you, अपना बहुत ख्याल रखें।